ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं तदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सैगन्धगुणार्णवं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सैगन्धललिता शिवशाकवितं च नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विजय शून्याधिकार सदेशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट। Boundless love. Yes. Our loving propensity expands just as a vibration of light or air expands, but we do not know where it ends. The nectar of devotion teaches us the science of loving every one of the living entities perfectly by the easy method of loving Krishna. We have failed to create peace and harmony in human society, even by such great attempts as the United Nations, because we do not know the right method. The method is very simple, but one has to understand it with a cool head. The nectar of devotion teaches all men how to perform the simple and natural method of loving Krishna, the Supreme Personality of Godhead. If we learn how to love Krishna, then it is very easy to immediately and simultaneously love every living being. It is like pouring water on the root of a tree or supplying food to one's stomach. The method of pouring water on the root of a tree or supplying food to the stomach is universally scientific and practical, as every one of us has experienced. Everyone knows well that when we eat something, or in other words, when we put food into the stomach, the energy created by such action is immediately distributed throughout the whole body. Similarly, when we pour water on the root, the energy thus created is immediately distributed throughout the entirety of even the largest tree. It is not possible to water the tree part by part, nor is it possible to feed the different parts of the body separately. The nectar of devotion will teach us how to turn the one switch that will immediately brighten everything, everywhere. One who does not know this method is missing the point of life. ईशु प्रभु जी। As far as material necessities are concerned, the human civilization at present moment is very much advanced and living comfortably. But still we are not happy because we are missing the point. The material comforts of life alone are not sufficient to make us happy. The root cause of our dissatisfaction is that our dormant love propensity has not been fulfilled despite our great advancement in the materialistic way of life. The nectar of devotion will give us practical hints how we can live in this material world perfectly engaged in devotional service and thus fulfill all desires in this life and the next. प्रभु Yes, Prabhuji. The nectar of devotion is not presented to condemn any way of materialistic life, but the attempt is to give information to religionists, philosophers, and people in general how to love Krishna. One may live without material discomfiture, but at the same time, one should learn the art of loving Krishna. At the present moment, we are inventing so many ways to utilizing our propensity to love, but factually, we are missing the real point, Krishna. We are watering all parts of the tree, but missing the tree's root. We are trying to keep our body fit by all means, but we are neglecting to supply food to the stomach. Missing Krishna means missing oneself also. Real self-realization and realization of Krishna go together simultaneously. For example, seeing oneself in the morning means seeing the sunrise also.
Without seeing the sunshine, no one can see him. Similarly, unless one has realized Krishna, there is no question of self-realization. Okay. Thank you. Moving to the next. Yes, Swati Mataji. Hare Krishna. Definition of pure devotional service. The authorized descriptions of bhakti or devotional service following in the footsteps of previous acharyas can be summarized in the following statement by Srila Rupa Goswami. First class devotional service is known by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness, serving the Lord favorably. The purport is that one may also be in Krishna consciousness unfavorably, but that cannot be counted as pure devotional service. Pure devotional service should be free from the desire for any material benefit or for sense gratification, as these desires are cultivated through productive activities and philosophical speculation. Generally, people are engaged in different activities to get some material profit, while most philosophers are engaged in proposing transcendental realization through volumes of word jugglery and speculation. Pure devotional service must always be free from such furtive activities and philosophical speculations. One has to learn Krishna consciousness or pure devotional service from the authorities by spontaneous loving service. Okay. Moving to the next. Yes, Anushka Mataji. Hare Krishna. Acting for Krishna, the essence of bhakti. This devotional service is a sort of cultivation. It is not simply inaction for people who like to be inactive or devote their time to silent meditation. There are many different methods for people who want this, but cultivation of Krishna consciousness is different. The particular word used by Srila Rupa Goswami in this connection is Anushilan, or cultivation by following the predecessor teachers, acharyas. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Without activity, consciousness alone cannot help us. All activities may be divided into two classes. One class may be for achieving a certain goal, and the other may be maybe for avoiding some unfavorable circumstance. In Sanskrit, these activities are called pravrti or nivriti, positive and negative action. There are many examples of negative action. For instance, a diseased person has to be cautious and take medicine in order to avoid making his illness worse. मतलब ये डूज एंड डोंट्स की तरह है, डूज प्रवृत्ति, डोंट्स निवृत्ति. जैसे आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा, फॉलो फॉर एवरीडे प्रिंसिपल्स, और फिर नो मीट ईटिंग, ये डोंट्स ये सब निवृत्ति आ गया. नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और चैंट हरे कृष्णा 16 डोंट्स प्रवृत्ति. इस तरह से हो गया. करेक्ट है ना अंशुमती जी? जी प्रभु जी. ओके, आगे चलते हैं. Kanak. Those who are cultivating spiritual life and executing devotional service are always engaged in activity. Such activity can be performed with the body or with the mind. Thinking, feeling, and willing are all activities of the mind. And when we will do something, the activity comes to be manifest by the gross bodily senses. Thus, in our mental activities, we should always try to think of Krishna and try to plan how to please him, following in the footsteps of the great acharyas and the personal spiritual master. There are activities of the body, activities of the mind, and activities of speech. Krishna, conscious person, engages his words in preaching the glories of the Lord. This is called Kirtan, and by his mind, a Krishna conscious person always thinks of the activities of the Lord as he is speaking on the battlefield of Kurukshetra or engaging in his various pastimes in Vrindavan with his devotees. In this way, one can always think of the activities and pastimes of the Lord. This is the mental culture of Krishna consciousness. Hare Krishna.
Similarly, we can offer many services with our bodily activities, but all such activities must be in relationship with Krishna. This relationship is established by connecting oneself with a bona fide spiritual master who is the direct representative of Krishna in the disciplic succession. Therefore, the execution of Krishna conscious activities with the body should be directed by the spiritual master and then performed with faith. The connection with the spiritual master is called initiation. From the date of initiation by the spiritual master, the connection between Krishna and a person cultivating Krishna consciousness is established. Without initiation up by a bona fide spiritual master, the actual connection with Krishna consciousness is never performed. Okay, Ashwini Prabhuji. The cultivation of Krishna consciousness is not material. The Lord has three general energies, namely external energy, internal energy, and marginal energy. The living entities are called marginal energy, and the material cosmic manifestation is the action of external or material energy. Then there is a spiritual world, which is a manifestation of internal energy. The living entities, who are called marginal energy, perform material activities when acting under the inferior external energy. And when they engage in activities under the internal or spiritual energy, the activities are called Krishna conscious. This means that those who are great souls or great devotees do not act under the spell of material energy, but act instead under the protection of the spiritual energy. Any activities done in devotional service on Krishna consciousness are directly under the control of the spiritual energy. In other words, energy is a sort of strength, and the strength can be spiritualized by the mercy of both the bona fide spiritual master and Krishna. In the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, Lord Chaitanya states that it is a fortunate person who comes in contact with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. To one who is serious about spiritual life, Krishna gives the intelligence to come in contact with the bona fide spiritual master. And then by the grace of the spiritual master, one becomes advanced in Krishna consciousness. In this way, the whole direction of Krishna consciousness is directly under the spiritual energy, Krishna and the spiritual master. Okay. The next, yes, Deepak Prabhu. The definition of a pure devotee as given by Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu can be summarized thus: his service is favorable and is always in relationship to Krishna. In order to keep the purity of such Krishna conscious activities, one must be free from all material desires and philosophical speculation. Any desire except for the service of the Lord is called material desire, and philosophical speculation refers to the sort of speculation which ultimately arrives at a conclusion of voidism and impersonalism. This conclusion is useless for a Krishna conscious person. Only rarely by philosophical speculation can one reach the conclusion of worshipping Vasudeva or Krishna. This is confirmed in the Bhagavad Gita itself. The ultimate end of philosophical speculation then must be Krishna with the understanding that Krishna is everything, the cause of all causes, and that one should therefore surrender unto him. If this ultimate goal is reached, then philosophical advancement is favorable. But if the conclusion of philosophical speculation is voidism or impersonal, that is not bhakti. Karma or fruitive activities sometimes understood to consist of ritualistic activities. There are many persons who are very much attracted by the ritualistic activities described in the Vedas. But if one becomes attracted simply to ritualistic activities without understanding Krishna, his activities are unfavorable to Krishna consciousness. Actually, Krishna consciousness can be based simply on hearing about Krishna, chanting about him, remembering him, etc. Srimad Bhagavatam describes 9 different processes, besides which everything done is unfavorable to Krishna consciousness. मतलब कर्म कांड की बात की गई है यहाँ पे, किसी भी एक्टिविटीज के लिए जो कर्म कांड करते हैं, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज थोड़ा बहुत हम लोग के यहाँ भी होती है, बट हम लोग वैष्णव परंपरा में करते हैं। तो जैसे हवन भी होता है, जैसे गर्भधान संस्कार रहता है, ये सब, या कुछ नया आइटम वगैरह लेते हैं तो उसका पूजा वगैरह हम लोग कराते हैं।
तो वैष्णव परंपरा में हम लोग करते हैं। कर्मकांडी परंपरा में तो डेमिगॉड वर्शिप में आ जाता है, तो कृष्णा को याद ही नहीं रखते हैं। हम लोग वैष्णव परंपरा में करते हैं, तो कृष्णा को और बाकी भगवान की जो इंफॉर्मेशन है उन सबका नाम उनका डिसाइड किया जाता है। तो वैसा है। ठीक है, आगे बढ़ सकते। अनुष्का माता जी। Srila Prabhupada Goswami has also quoted a definition from the Narad Panchratra as follows: one should be free from all material designations and by Krishna consciousness must be cleaned of all material contamination. He should be restored to his pure identity, in which he engages his senses in the service of the proprietor of the senses. So when our senses are engaged, the actual proprietor of the senses, that activity is called devotional service. In our conditioned state, our senses are engaged in serving the bodily demands. When the same senses are engaged in executing the order of Krishna, our activities are called bhakti. जैसे यहाँ पर आया है ना, कि engages his senses in the service of the proprietor of the senses. तो ये हमें क्लियर है कि भाई ठीक है, who is the proprietor of the senses? कृष्णा। तो ऐसा बोल रहा है कि when one he engages his senses in the service of Krishna, then it is a pure devotional service. It's a devotional service, right? So when our senses are engaged for Krishna, actual proprietor of the senses, that activity is called devotional service. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कंस भी तो पूरी तरह एंगेज ही था ना कृष्णा की सर्विस में, 24/7 सोचता रहता था भगवान क्या रहे, तो वो भी डिवोशनल सर्विस कर रहा था कि नहीं, वो क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको अनुष्का होता है, क्या कंस भी डिवोशनल सर्विस कर रहा था क्या? या जैसे शिशुपाल था, भगवान को गालियां देता ही रहता था, जब भी देखो तब वो भी सारी सेंसेस एंगेज कर ही रखी थी उसने भगवान के लिए, सब में कृष्णा ही देखता था, वो आंखों से भी सुनता था तो एकदम से गालियां देने लगता था भगवान का। कंस भी ऐसे ही पूरा सारी सेंसेस एंगेज रखता था भगवान की सर्विस में, तो क्या उसको हम डिवोशनल सर्विस कह सकते हैं? प्रभु, लेकिन वो नेगेटिव वे में सोचते थे। हाँ करेक्ट, दैट इज करेक्ट, अनफेवरेबली कर रहा था वो, है ना? जहाँ भक्ति है वहाँ पे फेवरेबली करना है ऐसा, तो उसका फिर डिवोशनल सर्विस बनी है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज प्रोसीड। As long as one identifies himself as belonging to a certain family, a certain city, or a certain nation, he is said to be covered with nations. When one is fully aware that he does not belong to any family, society, or country, but is eternally related to Krishna, he then realizes that his energy should be employed not in the interest of so-called family, society, or country, but in the interest of Krishna. This is purity of purpose and the platform of pure devotional service in Krishna consciousness. प्योरिटी ऑफ पर्पस, इनफैक्ट चैंटिंग में भी बोलते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से निकलना चाहते हैं इस संसार से और बैकुंठ जाना चाहते हैं, तो वो भी नाम अपराध कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहाँ पे हम सेल्फिश हो रहे हैं कि नहीं हमें कष्टों से निकलना है, बैकुंठ जाना है, तो वो भी that also doesn't come in the category of purity of purpose. Purity of purpose means everything to please Krishna. तो अगर मतलब कृष्णा हेल्प में डालना चाहें तो we are fine with that. We don't want to get rid of the miseries of this world just because of ourselves. We want to get out of it just to serve Krishna if Krishna so desired. That's pure devotional service. Correct? Okay, next. प्रभु जी क्वेश्चन था वहाँ पे, अगर कोई भक्त है वो इतना प्योरिटी से चैंट कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, है ना, तो भगवान हेल में डालेंगे क्यों? हाँ वो तो डेफिनेटली नहीं डालेंगे, पर भक्त ये मान के ना चले कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर हेल में नहीं जाऊंगा, वो तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा। ये तो मतलब ऐसा है कि
फॉर श्योर भगवान उसे, यहीं पर हम देखते हैं भक्तों का कष्ट वैसे ही हर लेते हैं, तो उसे और क्यों हेल वगैरह में डालेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता है। बट पॉइंट इज कि अगर कोई इस इंटेंशन से कर रहा है ना कि मैं हेल में जाने से बच जाऊंगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, या मैं इसलिए कर लूंगी कि मैं बैकवर्ड चला जाऊंगा, तो ये सब इसमें सेल्फिश डिजायर आ गई, तो वो प्योर डिवोशनल सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम तो जब इसलिए करते हैं ताकि हम और जब कर सके, भगवान की और सेवा कर सके, बस दैट इज आवर सोल मोटिव। जैसे वो पास्ट टाइम आता है जब भगवान के सिर में दर्द होता है और नारद जी बोलते हैं कैसे ठीक होगा, तो कहे कि इनके भक्तों की चरण रेणु छूट गई, तो सब लोग मना कर देते हैं, नारद जी भी मना कर देते हैं, कहते मेरे बस की नहीं भैया, ये तो हेल में जाने वाली बात आ गई। पर गोपियां कहती है नहीं नहीं, उनके एक क्षण के प्लेजर के लिए हम जाने को तैयार है नरक में। सो दैट कम्स अंडर प्योर डिवोशनल सर्विस, जो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति। करेक्ट है ना? करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। प्रभु जी, एक फॉलोअप क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। Yes, जैसे yes. प्रभुपाद ने फिर हर जगह मेंशन कर रखा है कि गेट आउट ऑफ दिस दर्शन, उसे कैसे काउंटर करेंगे? दैट इज आवर मार्केटिंग एजेंडा। राइट राइट राइट। सो मतलब दिस इज द फर्स्ट मोटिव कि हम किसी को बताएं, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि पहले यहाँ से बाहर हाँ, कृष्णा भी तो वही कर रहे हैं। अब देखो ना, जब भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि नहीं नहीं अर्जुन, तुम लड़ो ना, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम हार भी गए, सॉरी, अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ राजा की तरह सुख भोगोगे, और अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा। तो पहले तो अर्जुन को वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो, और लेटर ऑन करते करते लास्ट में बोलते हैं नो नो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। करेक्ट, तो हमारा ये वही मार्केटिंग वाली चीज है। पॉइंट ट्रू ट्रू ट्रू। वैसा है। केस मतलब वही है कि होल मोटिव ये है कि आप कृष्णा को अगर सर्विस करेंगे विद द प्योर डिवोशन, सो व्हाई कृष्णा वांट टू कीप अस हियर, ही विल कॉल बैक टू गोलोक। सो मतलब अगर आप प्रीचर हो तो हो सकता है वो आपको यहाँ रखे भी। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन लॉन्ग बैक विद सुंदर गोपाल ब्रो। आई सेड कि जो प्रीचर है, देखो प्रीचर जो प्रीच कर रहा है दिन रात, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो प्रीचिंग का हो गया है अभी, है ना? वो कुत्ते को भी देखता है तो प्रीच करना चाहता है, तो वो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके क्या करेगा आप बताओ? सही बात। कॉन्शियसनेस में प्रीचिंग आ गई है, तो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके करेगा क्या? वहां तो सभी प्योर डिवोटीज है, किसको प्रीच करेगा? Then Krishna would like to keep him in this material universe only, in some or other, या तो इसी यूनिवर्स में या कहीं और, उसको वहां डालते रहेंगे जहां जहां प्रीचिंग की जरूरत होगी। तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, because he is completely dependent on Krishna. For him, every universe, whether material or spiritual, that is spiritual world only. क्योंकि अब प्योर हो चुका है, भगवान की इच्छा से जहां भी जा रहा है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कपिल भगवान कपिल जो है, मदर ये युवती को यही तो बोल रहे हैं, कहें कि जो मेरा भक्त है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मोक्ष भी डिमांड नहीं करता है, जिसमें सालों सब मेरे लोक में आना, मेरे जैसा रूप पाना, ये सब वो डिमांड ही नहीं करता है, इसलिए मुझे वो बहुत प्रिय है। बस मेरी सर्विस डिमांड करता है, मे दैट बी इन मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन माय डिवोशनल सर्विस। इसलिए तो भगवान को भक्त सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ट्रू। Should I continue, Prabhuji? कर सकते हैं थोड़ा 2-3 मिनट। Okay, Prabhuji. Six features of pure bhakti. Next, Rupa Goswami gives 6 unique features of pure devotional service. Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Pure devotional service is the beginning of all auspiciousness. Pure devotional service automatically puts ones in transcendental pleasure. Pure devotional service is rarely achieved. Those in pure devotional service deride even the conception of liberation. समझ गया ना लास्ट वाला 5th पॉइंट जो हम बात कर रहे थे अभी? Yes, Prabhuji. They will deride even the conception of liberation. मुक्ति तो पीछे पीछे दौड़ ही रही है, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। Pure devotional service is the only means to attract Krishna. Krishna is all attractive, but pure devotional service attracts even him. This means that pure devotional service is even transcendentally stronger than Krishna himself, because it is Krishna's internal potency. Yes, Prabhuji.
प्रभु जी इसमें दो डाउट आ रहे हैं मेरे को, मतलब वैसा है कि जैसे अभी पहला पॉइंट है कि रिलीव्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मेटल डिस्ट्रेस, तो अगर जैसे कोई मतलब नया नया भक्ति में जुड़ा है ना, उससे वो अगर उसे ये पॉइंट पढ़ाएंगे तो उसका क्वेश्चन ये रहता है कि अरे मतलब कष्ट आने बंद हो जाएंगे। प्योर है तभी, मतलब अगर प्योर डिवोशनल सर्विस है तो मटेरियल लेवल से तो वो ऊपर ही उठ जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे रहता है, तो इसलिए मटेरियल डिस्ट्रेस उसे ट्रबल नहीं करते। अच्छा, जैसे मतलब नेम फेम, यस प्रभु जी, इवन बॉडीली भी उसे पेन डिस्टर्ब नहीं करते। बाहर से देखने में लगता है कि ये परेशान है, किडनी फेल हो गई, ये हो गया, प्योर डिवोटी है, बाहर से देखने में ऐसा लगेगा ही सफरिंग, बट वो परम आनंद में है फ्रॉम इनसाइड। तो उसको ये सब डिस्ट्रेस से ऊपर उठ जाता है, बिकॉज इज डूइंग प्योर डिवोशनल सर्विस। हम लोग अभी प्योर है नहीं पूरी तरह, इसलिए हम लोग को वो स्ट्रेस अफेक्ट करते हैं, ये क्यों कह दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, तो सब भी हमें अफेक्ट करते हैं। तो नए व्यक्ति को भी हम इस पॉइंट पर तभी लाते हैं जब उसने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया हो भक्ति में। ये जब फीचर्स है ना प्योर डिवोशनल सर्विस के, ये भक्ति रसामृत सिंधु इलेक्ट्रो डिवोशन से लिए गए हैं। ओके प्रभु, वो तो लास्ट में आता है। अच्छा, बट वैसे हमें पॉइंट तो क्लियर है ना? हाँ यस प्रभु जी, यस है ना? ओके प्रभु जी। दूसरा ये है कि ये ऐसे लग रहा है कि मायावाद को प्रमोट कर रहा है, प्योर डिवोशनल सर्विस मींस प्रभु जी, मतलब वो कह रहे हैं कि दिस मींस प्योर डिवोशनल सर्विस इवन ट्रांसेंडेंटली स्ट्रॉन्गर देन कृष्ण हिमसेल्फ बिकॉज़ इट इज कृष्णास इंटरनल पोटेंसी। ये बिल्कुल ट्रांसेंडेंटली स्ट्रांग है क्योंकि कृष्णा को भी अट्रैक्ट करती है ना ये। हाँ मतलब कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। इंटरनल पोटेंसी की बात नहीं कर रहे इसमें, ये वही वाली बात हो गया, सर्वधर्मान परित्यजाय वाली बात नहीं लग रही इसमें कि उसकी ओर जाओ, तो भगवान के अंदर जो है उसे वो मतलब उसे ट्रैक करते हैं हम, जो भगवान के भी अंदर है इंटरनल पोटेंसी। नहीं, अभी हम डिस्कस किए ना, भगवान की 3 एनर्जी होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी, एक मार्जिनल एनर्जी और एक एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी में हमें पता है मटेरियल यूनिवर्स आ गया, सब जितना भी है। इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ गया। और फिर मार्जिनल में हम लोग आ गए कि बिकॉज वी कैन लाई इन एनी ऑफ द टू, इंटरनल एक्सटर्नल में हम लोग लाई कर सकते हैं, करेक्ट, बेस्ड ऑन अवर चॉइस ऑफ एक्टिविटीज। ये तो क्लियर है हमें, है ना, कि हम मार्जिनल में है और हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एक्टिविटीज करेंगे तो हम इंटरनल एनर्जी में पार्ट बन जाएंगे, और एक्सटर्नल लेवल पे एक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल एनर्जी का पार्ट बन जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई ठीक है, अब प्योर डिवोशनल सर्विस में क्या होता है कि जब कोई प्योर डिवोशनल सर्विस करता है तो भगवान का इंटरनल पोटेंसी, जो हम श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं वैष्णव गुरु गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, तो वो मतलब वो डायरेक्टली राधा रानी को सर्व करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्वियसली भगवान की सेवा कर रहा है तो राधा रानी के कृपा से ही हो रहा है। तो दिस अट्रैक्ट्स इवन कृष्णा, कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरीवन हु इज मदन मोहन, और इवन डिवोशनल सर्विस अट्रैक्ट्स कृष्णा आल्सो। तो एक सेंस में देखा जाए तो इट इज इवन स्ट्रॉन्गर टू कृष्ण। जैसे नाम प्रभु बोलते हैं, नाम प्रभु इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। नाम तो कृष्णा का ही है, बट कहने को बोले इज दिस मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नाम कृष्णा से ऊपर हो गया, एक सेंस में है अगर मर्सीफुल की बात की जाएगी तो, बट अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो नहीं, कृष्णा ही तो सुप्रीम। तो अचिंत्य भेदाभेद फिलोसफी इसी को तो बोलते हैं कि है भी और नहीं भी। समझ क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी। तो बोले कि नाम प्रभु तो अब बता दिया कृष्णा से ऊपर बता दिया, बट मर्सीफुल के उसमें हम बोल देते हैं कि नहीं, भगवान का नाम उनसे भी ऊपर। जैसे डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन नाम प्रभु, हरि नाम से भी ज्यादा मर्सीफुल। क्यों? क्योंकि वो नाम देते हैं। तो अगर उस सेंस में देखो तो डिवोटीज तो फिर कृष्णा से भी ऊपर हो गए, बट ऐसा एब्सोल्यूट ट्रुथ कैसे ऊपर हो सकते हैं? तो है भी और नहीं भी। नहीं क्यों? क्योंकि नहीं कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। और है किस सेंस में? क्योंकि वो हरि नाम देते हैं, हरि नाम के माध्यम से कृष्णा मिलते हैं। दैट इज अचिंत्य भेदाभेद। ये क्लियर हो पा रहा है? देखो यस प्रभु जी, हाँ थोड़ा थोड़ा है मतलब क्लियर। मतलब ये इंटरनल पोटेंसी ऐसा नहीं है कि अब भगवान के अंदर कोई बैठा उसको बोला जा रहा है। अच्छा, मतलब इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रभु जी की इंटरनल पोटेंसी मींस राधा रानी, और अगर राधा रानी खुद भगवान को सर्व करने लगी हुई है
तो अगर आप इंटरनल पोटेंसी को सर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर मतलब वो कृष्ण ही सर्व रहे हैं, मतलब एनी हाउ. And Krishna, because Krishna attracts everyone, but he is attracted, even Krishna is attracted from bhakti. That is why bhakti becomes more glorious in comparison to Krishna. But otherwise Krishna is all glorious. तो दोनों ही बात आ गई इसमें, अचिंत्य भेद अभेद बोलते हैं इसको. है भी और नहीं. ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद फिलोसफी लाके दोनों ही बातें कट कर दी. बोले नहीं है, फिर कहे कि नहीं है, बोले नहीं ऐसा भी नहीं है भी. दोनों ही बातें बोल दी उसमें. ये मायावादी से जब उनका डिबेट होता है तो उसमें ये सब चीजें सीखने को मिलती है चैतन्य महाप्रभु को. अच्छा. आगे कंटिन्यू करेंगे. हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे फिर यहाँ से. ओके प्रभु. If anyone wants to share anything, then please feel free. No? Okay. So we'll stop here. Vancha kalptaru vaishya kripa sindhya paditanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you for joining everyone. Hare Krishna.